Today we will discuss on the non-verbal codes, physical appearance. 6 codes, physical appearance. So the non-verbal codes. So look here, the physical appearance plays a vital role while speaking in interview, public or social gathering. So the physical appearance of particular persons plays a vital role in interview, in public or in social gathering. So the physical appearance convey a lot about a particular person's, how he appear, how he maintains himself or herself to the public. So it matter a lot. It create a visual impact on receiver. So the physical appearance of a particular person create a visual impact on the receiver. So physical appearance is a most important part of the sender. So the receiver, the message is impressed by the physical appearance of the speaker in non-verbal communication. In non-verbal communication, so the physical appearance. So the receiver is impressed by the physical appearance of the speaker in non-verbal communication. So the speaker should maintain his physical appearance so that he or she can create an impact on the mind of the receiver. So the speaker may not be very beautiful or handsome, but smart look and the outfit appearance matter a lot for the receiver. So the receiver may not be very beautiful or handsome, but he should maintain his outward appearance clearly, and he should maintain but smart look. But he should maintain smart look as well. So all these things create a matter a lot for the speaker, or all these things create an impact on the mind of the receiver. So maintaining smart and outfit appearance is very important for the sender. The outward appearance needs polish and clean look. So outward appearance means it needs clean look, polish. So that now the hairstyle, dress, clean nails and shiny shoes and speaker person. So all these things like hairstyle, dress, clean nails and the shiny shoes enhance speaker personality. All these things, hairstyle, dress, shoes, all these things enhance this personality of the speaker. So he should have maintained all these things. If the speaker looks smart, the receiver automatically adds positive qualities to him or her. So if the speaker looks smart, if the sender looks smart, the receiver automatically adds positive quality to his or her. So the speaker should maintain himself or herself clearly. So he should maintain his physical appearance so that he can create an impact on the mind of the receiver, so that receiver adds a positive feedback, adds a positive qualities to him or her. The color of the attire should match with the occasion. So it also should clear in mind. It also keep in mind, the receiver should keep in mind the occasion where he is going to deliver his speech, or he going to present himself or herself. So he should have the knowledge of the occasions. Like for interview, if the speaker goes to face an interview with informal dress, it indicates that he is not serious about the interview. Or if particular persons goes to a party with a formal dress, so it also indicates that he don't know about the occasions. So speaker or any persons should have the clear knowledge of the occasion so that he can maintain himself before going to that particular place. So physical appearance plays a vital role in non-verbal communications. The physical appearance plays a vital role while speaking in interview, public, social gathering. So फिजिकल अपीयरेंस फिजिकल अपीयरेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। जैसे इंटरव्यू में, पब्लिक और सोशल गैदरिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर इंटरव्यू में एक ड्रेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पब्लिक में, सोशल गैदरिंग में, जहाँ भी।
विजुअल इम्पैक्ट जो है ड्रेस, फिजिकल अपीयरेंस, कैसा फिजिकल अपीयरेंस, कैसा ड्रेस, कैसे वो अपने आप को मेंटेन करके आ रहा है, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है रिसीवर के ऊपर। जो इम्प्रेस्ड बाय द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द स्पीकर। नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में स्पीकर का जो फिजिकल अपीयरेंस है उसके द्वारा रिसीवर इम्प्रेस्ड हो जाता है। अगर खुद को सब कुछ मेंटेन करके ठीक ठाक क्लीन करके आए अगर सेंडर, तो बहुत सारा एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है, इम्प्रेस्ड हो जाता है रिसीवर। द स्पीकर मे नॉट बी वेरी ब्यूटीफुल हैंडसम बट स्मार्ट लुक एंड आउटफिट अपीयरेंस मैटर अ लॉट फॉर द रिसीवर। सो अगर स्पीकर जो है ब्यूटीफुल हैंडसम नहीं भी हो सकता, लेकिन वो अगर अपने को खुद को स्मार्ट लुक और आउटफिट जो अपीयरेंस ड्रेस है, आउटफिट अपीयरेंस जो है वो क्लीन सब कुछ ठीक ठाक करके आए, तो ये बहुत रिसीवर के ऊपर बहुत सारा मैटर करता है ये। द आउटवर्ड अपीयरेंस नीड्स पॉलिश एंड क्लीन लुक। सो आउटवर्ड जो अपीयरेंस है इसको क्या जरूरत है, ऐसे क्लीन और पॉलिश लुक जरूरत है सबसे ज़्यादा आउटवर्ड अपीयरेंस। इसमें क्या इंक्लूड है, हेयर स्टाइल, ड्रेस, क्लीन नेल्स एंड शाइनी शूज। ये सब क्या करता है, स्पीकर का पर्सनैलिटी क्रिएट करता है, पर्सनैलिटी बढ़ाता है। इफ द स्पीकर लुक्स स्मार्ट द रिसीवर ऑटोमेटिकली एड्स पॉजिटिव क्वालिटीज टू। इफ द स्पीकर जो है वो अगर स्मार्टली प्रेजेंट अपने स्मार्टली प्रेजेंट करे बिफोर द रिसीवर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव क्वालिटीज उसके ऊपर आ जाता है। द कलर ऑफ द अटायर शुड मैच द ओकेजन। सो द कलर ऑफ द अटायर, जो ड्रेस पहन के जाएगा कोई भी कहीं भी कुछ भी ओकेजन में, तो कलर जो है ड्रेस का वो बहुत सारा मैटर करता है। जैसे एग्जांपल दिया है कि इंटरव्यू में अगर इनफॉर्मल ड्रेस पहन के जाए तो इसका इंडिकेट करता है कि पब्लिक वो पर्टिकुलर पर्सन्स इंटरव्यू में तो सीरियस नहीं है, लेकिन अगर पार्टी में जाए और फॉर्मल ड्रेस पहन के जाए तभी ऑपोजिट आता है। नाउ लुक हियर the second one is the artifacts. So here the artifacts, another non-verbal codes. So artifacts are concerned with the environment and surrounding objects. So artifacts concern the environment and surrounding objects. The surrounding objects in the environment are all these things included in artifacts. The physical environment uses its own non-verbal language. The physical environment uses its own non-verbal language. So the physical appearance, physical environment itself use its own non-verbal language. Artifacts are the articles that convey strong message through non-verbal communication. So the artifacts are the articles that convey strong message through non-verbal communication. So artifacts itself convey strong message in non-verbal communication. Some examples of artifacts include jewelry, uniform and other accessories. So all these things are included in artifacts. So now some example of artifacts. Artifacts convey message without speaking a word. Artifacts convey message without speaking a word. So artifacts convey message without speaking a word. So artifact itself convey a non-verbal message of the particular persons. For the particular persons, it is the unique characteristics of the artifacts in non-verbal communication. So it is the unique characteristics of the artifacts that it cannot convey any words but convey a lot about the particular persons. The way in which private place is decorated indicate message about a particular person. So the private place, how the private place is decorated indicates a lot about the particular persons who is the owner of that private place. For example, a boss private room usually arranged with nice furniture and objects. So it is common that the private room of a boss is decorated with furniture and objects. Thus, furniture and objects can highlight wealthy and status. So the furniture and the objects that with which the boss's private room is decorated highlights the wealthy and the status of the boss. So it is the example of the artifacts that convey the message wealthiness and the status of the particular persons. So artifacts are the articles that we select to
add on our clothing and have conveying a strong message through non-verbal communication. Some examples of artifacts include jewelry, uniform, and other accessories. The reasons that artifacts are important in non-verbal communications. They convey message without any words. So it is the most important characteristics of artifacts to convey message without using any words. So artifact itself convey message. So by looking the artifacts, the particular persons can have knowledge about the persons who owns that artifacts. So artifacts play a vital role in non-verbal communications. For example, a customer might walk into a store wearing a crucifix on his neck during the Easter seasons. From that single piece of jewelry, that store clerk could safely say Happy Easter to the customer. So the artifacts, the crucifixions, plays a vital role to transmit a message to the store clerk, so that the store clerk could safely say the Happy Easter to the customer. So the artifacts are a physical object such as clothing indicates to other persons personal and social belief or habits. So artifacts play a vital role in non-verbal communications, as well as the magazines, books, etc. Communicates a different message about the taste of the persons. If you go to a particular person and his or her room is decorated with a huge amount of book, then you can have the knowledge that the particular persons reads a lot. So it also communicate a message, or it also transmit a message about the persons. So artifacts play a vital role in non-verbal communication. Artifacts are concerned with the environment and objects surrounding objects. So artifacts क्या है? Artifacts environment and surrounding object जो है वही सब है artifacts. आसपास surrounding objects और environment में जितना कुछ है वही है artifacts. फिजिकल एनवायरनमेंट यूज इट्स ओन नॉन-वर्बल. फिजिकल एनवायरनमेंट जो फिजिकल है उसका करीब जितना एनवायरनमेंट है जो क्या है वही एक नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन में रोल प्ले करता है. आर्टिफैक्ट्स आर द आर्टिकल्स दैट कन्वे स्ट्रॉन्ग मैसेज थ्रू नॉन-वर्बल. आर्टिफैक्ट्स कुछ आर्टिकल है जो स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे करता है नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन में. सम एग्जांपल आर्टिकल्स क्या है? ज्वेलरी, यूनिफॉर्म, अदर एक्सेसरीज, ये सब है आर्टिफैक्ट्स में. आर्टिफैक्ट्स कन्वे ए मैसेज विदाउट स्पीकिंग वर्ड. आर्टिफैक्ट्स क्या है? आर्टिफैक्ट्स मैसेज कन्वे देता है रिसीवर को, लेकिन कुछ भी वर्ड उसमें इंक्लूड नहीं होता. रिसीवर को क्या है? रिसीवर आर्टिफैक्ट्स इटसेल्फ इज ए मैसेज. आर्टिफैक्ट्स जो है वही एक मैसेज है जो रिसीवर को देता है. इट इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक. वही एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है आर्टिफैक्ट्स का कि ये कुछ वर्ड कन्वे नहीं करता, लेकिन इटसेल्फ इज ए मैसेज फॉर द रिसीवर. द वे इन विच प्राइवेट प्लेस इज डेकोरेटेड इंडिकेट मैसेज अबाउट द पर्टिकुलर पर्सन. जैसे कुछ प्राइवेट प्लेस डेकोरेट कैसा है ये बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द पार्सन्स. जिसका प्राइवेट प्लेस है उसके बारे में एग्जांपल दिया हुआ है. बॉस का प्राइवेट प्लेस जनरल का डेकोरेट क्या होता है? फर्नीचर, बहुत कीमती फर्नीचर ऑब्जेक्ट से भरा हुआ होता है. तो इसको देख के क्या होता है? इसको देख के मालूम पड़ता है कि बॉस बहुत बड़ा आदमी है. वेल्थीनेस स्टेटस का मालूम होता है. किसी का रूम में जाओ, किसी का रूम में मैगजीन हो, बहुत सारा किताब हो लाइब्रेरी की तरह, तो उससे क्या होता है कि वो आदमी बहुत पढ़ाई करता है. सो ऑल दिस थिंग्स convey a message about a particular person without conveying any words. So artifacts play a vital role in non-verbal communications. Thank you.